Assalamualaikum 3 class, how are you all? Today we are going to start the book work of chapter number 6. Exercise A is choose the correct option and write in the space provided. Number 1 is dash is used for spray painting. एयर ब्रश, ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें, इसको आपने टिक करना है और ब्लैंक को फिल करना है. सेकंड वन इज डैश टूल इज़ यूज टू सी लार्ज इमेजेस. मैग्नीफायर, इसमें आपके पास सी ऑप्शन है. थर्ड वन इज डैश टूल इज यूज टू कॉपी कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. पिक कलर. फोर्थ वन इज, अब ये किस चीज़ का आइकन बना हुआ है, इज एन आइकन ऑफ ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन है. Then exercise B is fill in the blanks. Number 1 is the freeform selection tool is used to select irregular area. Second one is you can choose the colors from color box. Third one is you can choose the thickness of brush from size option. Fourth one is, अब ये कौन सा टूल बना हुआ है, मैग्नीफायर टूल. फिफ्थ भी क्या है, ये कॉपी कमांड, ठीक है. Now come to the exercise C. Take the correct and cross the wrong ones. Number 1 is airbrush is used to fill color in air. Cross. And second one is pick color is used to copy color from objects. Yes. Third one is magnify means to reduce the size of a picture. No. Fourth one is to delete an area use select tool. No. Fifth one is brush is used to make freehand drawing. यस, ठीक है. नाउ कम टू द पेज नंबर 67. अभी एक्सरसाइज दी है, ये हम कॉपी पे करेंगे, लेकिन इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हम बुक पे ही करेंगे, ठीक है. कंप्लीट द स्टेप्स टू मैग्नीफाई एन इमेज. ए इज क्लिक होम टैब. क्लिक मैग्नीफायर फ्रॉम टूल्स ग्रुप. सी ब्रिंग द माउस टू वर्क एरिया. डी रेक्टेंगल विद मैग्नीफायर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. E. Click left mouse button on that portion you want to magnify. F. The portion of image appears in larger size. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं कि आपने इमेज को मैग्नीफाई करना है. कैसे करना है, मैग्नीफाई मीन्स इसको लार्ज कैसे करना है, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ फ्लो चार्ट गिवन टू यूज सेलेक्ट टूल. कंप्लीट द स्टेप्स इन द ब्लैंक एरियाज. फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार्ट हुआ. फिर सेकेंड में हमारे पास होम टैब आ जाएगा. क्लिक ड्रॉप डाउन बटन. देन क्लिक रेक्टेंगुलर सेलेक्शन. रेक्टेंगुलर सेलेक्ट द एरिया. नाउ द पोर्शन कैन बी कॉपीड और डिलीटेड. एट द एंड आप एंड लिख लेंगे, ठीक है. ओके, फिर पेज नंबर 68 पे ये मैच द कॉलम्स हैं. इसमें हमने बताना है कि हमने कौन सा टूल यूज़ करके ड्राइंग बनाई है या मैग्नीफाई कर रहे हैं, ये सब हमने बताना है, ठीक है. अब जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें हमारे पास एयर ब्रश टूल यूज़ हुआ है. सेकंड पिक्चर में फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है, फ्री हैंड सिलेक्शन हुई है इसमें. देन थर्ड पिक्चर में हमारे पास ब्रश टूल्स का यूज़ हुआ है. फोर्थ पिक्चर में मैग्नीफायर यूज़ हुआ है, ठीक है. और लास्ट वाली पिक्चर में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज़ हुआ है, ठीक है. अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज एफ है, जंबल वर्ड्स हैं. फर्स्ट जंबल वर्ड ब्रश है, BRUSH ब्रश. सेकंड जंबल वर्ड इज़ मैग्नीफाई, MAGNIFA मैग्नीफाई. थर्ड वन इज़ रोटेट, ROTATE रोटेट. फोर्थ वन इज़ एयर ब्रश, AIR एयर, BRUSH ब्रश. फिफ्थ वन इज़ सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट. ये बुक वर्क कंप्लीट हो गया. अब हम कॉपी वर्क की तरफ मूव करते हैं. Okay, write down at the top of the page CW and date. Chapter number 6. Topic more about paint. Define the following tools. Number 1 is brush tool. Brush tool is like a paint brush or a marker. Number 2 is airbrush tool. Airbrush is used to spray color in your drawing. Third one is pick color tool. Pick color tool is used to copy the color from one object to another. Fourth one is magnifier tool. Magnifier tool is used to see the picture in a bigger size. Select tool. Select tool is used to select a rectangular portion of a drawing. Sixth one is freeform selection is used to select the part of drawing in an irregular shape. Seventh one is used to move the image in any direction. Then exercise D. Question number 1 is which tool is used to select irregular portions of a drawing?
Freeform selection tool is used to select irregular portions of a drawing. Which tool is used to copy color from one object to another? Pick color tool is used to copy color from one object to another. Which brush is used for spray painting? Airbrush is used for spray painting. ठीक है, ये आपका कॉपी वर्क था और बुक वर्क काइंडली इसको नीटली कंप्लीट कीजिएगा प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ, प्रॉपर क्लास वर्क एंड प्रॉपर डेट के साथ. ओके, थैंक यू सो मच.